worked on 2 weeks ago were the pronouns. हमने 2 वीक पहले जो है वो प्रोनाउंस जो हैं उसके ऊपर उसको सीखना शुरू किया और आप सबको पता है कि प्रोनाउंस जो है वो क्या होते हैं। प्रोनाउंस होते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे मेरा नाम कैनेथ है तो मैं हर दफा ये नहीं कहूँगा कैनेथ पानी पी रहा है, मैं कहूँगा कि मैं पानी पी रहा हूँ और जो मैं है या आई है वो प्रोनाउन। Wow, that was a lot. Explain them like a little bit background. So the pronouns we're working on are pronouns that are the subject of the sentence. That is, they're the ones doing the action. और जो प्रोनाउन है वो ये है कि एक्शन जो है वो कौन कर रहा है। एक्शन का मतलब है कि जैसे मैं, आप, वो, तो एक्शन करने वाले को जो है हम प्रोनाउन कहते हैं। So I eat, you read, she sits down. और जैसे हम कह सकते हैं कि I, you, he, she, it sit down, या मैं, आप, तुम, वो लड़की या वो जानवर बैठता है। So not the object. So it's not the me form. God loves me is a different form, and we haven't learned that yet. और इसके अंदर ये है कि जैसे हम एक और फॉर्म है जो कि मी के लिए इस्तेमाल होती है, मेरे लिए, ठीक है। एक आई है और एक मी है, दोनों में फर्क है। लेकिन जो मी की जो फॉर्म है वो अभी तक हमने नहीं सीखी और वो हम सीखेंगे। So to read the language, any of them, you have to learn these words. There's no getting around that. You have to memorize them. और जब भी जो लैंग्वेज होती है उसको सीखने के लिए आपको लफ्जों को जो है वो जुबानी याद करना पड़ता है। All right. So we worked on these last time. So what I'd really like to do this time is to try some sentences with them. और पिछली दफा जो है हमने इनके ऊपर काम किया था और आज जो है हम इनके साथ, इन लफ्जों के साथ मिलकर, प्रोनाउन के साथ मिलकर जो है कुछ सेंटेंसेस जो हैं, जुमले जो है वो बनाएंगे। और आप किस ने जो है इसकी प्रैक्टिस की थी वो आप मुझे बताएं। And then we'll introduce some a couple more details. और हम इसके अलावा कुछ और जो तफसीलात हैं वो भी आपको बताएंगे। In Hebrew and in Aramaic, you can make a sentence by putting a pronoun with another noun. For example, I, preacher. That would be a sentence meaning I am a preacher. और जो अरामी और जो अबरानी है उसके अंदर हम नाउन के साथ जब प्रोनाउन लगाते हैं एक पूरा जुमला बन जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं कहता हूं कि मैं एक प्रीचर हूं, तो उसको जो है अबरानी में बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें नाउन और प्रोनाउन को मिलाना पड़ेगा। In English, we have to have a verb. We have to say, I am, you are, she is a preacher, policeman, doctor. लेकिन इंग्लिश जुबान के लिए हमारे पास एक वर्ब का होना जरूरत है। और जब तक जैसे कहते हैं कि I am, she is, he is, you are, और उसके साथ जो भी आगे जैसे कोई डॉक्टर है, टीचर है, तो तब ये जुमला कंप्लीट होता है। So in Hebrew and Aramaic, you do not need that verb. लेकिन जो अरामी और अबरानी जुबान में आपको वर्ब की जरूरत नहीं होती। But in Greek, you do. लेकिन जो ग्रीक जुबान है इसके अंदर आपको जरूरत है।
So in the paragraph in the grammar I gave you, I gave the sentence, David is king. और ये जो पैराग्राफ है जो 3.8 है उसके अंदर एक जुमला है डेविड इज किंग दाऊद जो है वो बादशाह है In Hebrew and Aramaic, you would just have to say David Melech, David king, and it would be understood as David is king. so we have the same principle in Urdu. Okay. Yep. तो जो जब हम इसको उसमें बोलेंगे अब्रानी में या अरामी में तो हमें सिर्फ और सिर्फ कहना पड़ेगा डेविड मेलेक. But in Greek, like English, you have to have a verb. लेकिन जब हम ग्रीक में जाएंगे तो ग्रीक के लिए हमारे पास जो है एक वर्ब का होना बहुत जरूरी है. Now, since the verb is in the sentence David is king, couples David with the word king, we call this type of verb a copula. और जब हम इस तरह का जो वर्ब आता है कि जैसे दाऊद जो है बादशाह है डेविड इज किंग इस तरह के वर्ब को जो है हम कपिला कहते हैं. And in Greek, the two most common are the verbs imi and yinami. Imi and yinami. और जो ग्रीक है उसके अंदर जो बहुत ज्यादा दो कॉमन इस्तेमाल होते हैं वो एमी और Yinami. Please say it again. Yinami. Yinami. So, imi is more common in sentences like David is king. So we're going to learn that one. Unfortunately, it has 6 forms. और जो एमी है जैसे हमने ये कहा कि एमी वो उसका मतलब है कि मैं हूं तो उसका मतलब ये हुआ कि वो कह रहा है कि मैं बादशाह हूं तो वो कहेगा अपना नाम और साथ एमी कहेगा. लेकिन इसकी जो है फॉर्म्स हैं वो तकरीबन 6 तरह की हैं. Now, the Greek verb has different forms depending on what person is the subject and what number is the subject, singular or plural. जो ग्रीक है उसके अंदर जो है सबसे पहले देखा जाता है कि कौन है जैसे कि मैं हूं तुम हो या ही शी इट है तो उसके लिए 3 मुख्तलिफ फॉर्म्स इस्तेमाल होती. फिर उसके बाद जब उनका जमा किया जाता है उनका प्लूरल देखा जाता है तो उसके साथ 3 और फॉर्म्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं. Now, it turns out the English verb to be, we do the same thing. और जो हम ये देखते हैं कि जो इंग्लिश जो वर्ब है वी इसके लिए हम बी यही इस्तेमाल करते हैं. Notice that it's I am, you are, he, she, it is. So it goes through the forms am, are, and is, depending on which person the subject is. और इसमें जैसे ये है कि I am, you are, he, she, it is. तो जैसे am, are, I और इसमें ये देखा जाता है कि उससे जो पहले जो है वो जो शख्स है वो कौन है. It's just that in Greek, they also have a separate form for the plural of those. In English, we use are for all the plurals. और इसी तरीके से जो कि ग्रीक है उसमें जब हम जमा इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए जैसे हम वी आर लिखते हैं यू आर लिखते हैं और ही शी इट के लिए जब उसका जमा आता है तो हमेशा ही दे आर लिखते हैं. अगर लड़कियां और लड़के जो मिक्स हों तो फिर भी दे आर कहते हैं. सिर्फ लड़कियां ज्यादा हों तब भी दे आर कहते हैं. सिर्फ लड़के ज्यादा हों तब भी दे आर कहते हैं. So, by the way, the actual stem, way back in the history of the language of Greek, of the verb to be, which is what me means, is the same as the English word is. Notice the S that we have.
और ये जो शुरू में इसकी जो स्टेम थी जिससे ये लफ्ज निकला है तो उसके लिए जो है वो इज की तरह थी. So that's English and Greek are Indo-European languages and are distantly related. और क्योंकि इंग्लिश और जो ग्रीक है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं और वो आपस में काफी ज्यादा रिलेटेड है. So we need to learn these 6 words, but we have them here, and you can refer back to this chart. और ये जो 6 लफ्ज हैं ये हमने जो है सीखने हैं जुबानी और इससे हम जो है अगर आपके पास ये चार्ट है 3.8 इसके अंदर है और आप इसको जो है जुबानी याद करें. Let's read the word so you know how to pronounce it. अगर आपके पास ये नोट्स पड़े हुए हैं तो उर्दू में आगे इसके लिख लें कि इसको किस तरीके से आपने प्रोनाउंस करना है. दोबारा मैं कह रहा हूं अगर आपके पास नोट्स हैं तो उर्दू में इसके आगे लिखें कि आपने किस तरह प्रोनाउंस करना है. अगर कोई नोट्स नहीं लाया तो सामने से इसको कॉपी करें और साथ जो है उसके लिखने का तरीका जो है वो देखें क्या है उर्दू में. So we're going to refer to them by person and number. For example, this is going to be first person singular, this form. और हमने जब इनको रेफर करना है तो हमने ये कहना है पर्सन और उसके बाद कि उसकी वो सिंगुलर है या प्लूरल है कि उसकी फॉर्म कैसी है. So the first person singular form is pronounced e, me. और जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म है उसको प्रोनाउंस करते हैं ई मी. Notice that an epsilon iota and an iota are pronounced exactly the same. और आप ये देखें कि ये एप्सिलॉन आयोटा है और इसको हमने एक ही तरह से जो है प्रोनाउंस करना है. So imi. इसको हम पढ़ेंगे इमी. That curved line is called a smooth breathing mark, and just basically ignore it. और ऊपर जो आपको जो पेश की तरह का नजर आ रहा है इसको स्मूथ ब्रीदिंग मार्क कहते हैं और इसको आप ऐसे ही बोलते हैं कि जैसे आप इसको इग्नोर कर रहे हैं. This is the accent mark, so you want to stress the syllable that the accent mark is on. और आखिर में जो ऊपर आपको एक निशान नजर आ रहा है इसको हम एक्सेंट मार्क कहते हैं और आपने इस एक्सेंट मार्क के ऊपर जोर देना है. So imi. तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे इमी. Now the second person singular form only has one syllable. और जो सेकंड पर्सनल सिंगुलर फॉर्म है उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म है. And notice it's got that same smooth breathing mark. और आप ये देखें इसके ऊपर जो है वो जो स्मूथ ब्रीदिंग मार्क है. But then it's got a curved line over it. That's just another accent mark. लेकिन इसके पास एक और एक ऊपर एक छतरी की तरह कर्व लाइन है इसको हम जो है एक्सेंट मार्क कहेंगे. And there's only one syllable, so it doesn't really affect how you pronounce it. और इसके अंदर जो है वो आप देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक सिलेबल है तो इससे इसको ज्यादा अफेक्ट नहीं करता कि आप इसको किस तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं. So this syllable is identical to the first syllable of the first person singular form. और आप ये देखें कि ये इसका जो फर्स्ट सिलेबल है वो इसके जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है इसके जो पहला जो सिलेबल है उससे ये मिल रहा है. बिल्कुल वही है. So you tell me how to pronounce this. और आप मुझे बताएं कि इसको प्रोनाउंस कैसे करना. लाहौर में से कोई बताए. लाहौर. मैं आपका माइक खोल रहा हूँ. रायमंड में सुनील आप बताओ. आपको मैंने माइक खोल दिया. नहीं खुला. आपको खोलना पड़ना. That's right. Tika. E. E. Oh, I thought I heard somebody say E. इसको हम ई जो है वो पढ़ें. Okay. Let's look at the third person singular form.
और अब हम देखते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म को. The parentheses indicate that the new is an option at the end of the word. Sometimes it shows up and sometimes it doesn't. और आप जो ब्रैकेट के अंदर देखेंगे कि जो न्यू है वो एक ऑप्शनल है. कई दफा ये आपको जो है किसी जुमले के अंदर नजर आएगा और कई दफा ये नजर नहीं आएगा. You get the new, it does show up if the next word begins with a vowel. और ये न्यू जो है इसको आपको हमेशा तब नजर आएगा जब अगला जो लफ्ज है वो एक वॉल से शुरू हो रहा होगा. And if it begins with a consonant, the next word begins with a consonant, you do not get the new. और उसके बाद अगर कोई जो है कोई लफ्ज इसके बाद कोई लफ्ज जो है वो कॉन्सोनेंट के साथ शुरू हो रहा है तो फिर आपको ये नजर नहीं आएगा. Okay, we have two vowels in this word, so we have two syllables. और हमारे पास जो है दो वॉल हैं इसके अंदर तो इसलिए हम इसके दो ही सिलेबल होंगे. And the first syllable is the epsilon sigma. और जो पहला जो सिलेबल है वो है एप्सिलॉन और सिग्मा. And the second syllable is the tau iota. और दूसरा सिलेबल जो है वो टाउ है और इयोटा है. So the first syllable is S. और जो पहला सिलेबल है इसको हम पढ़ेंगे एस. And the second syllable T. और जो सेकंड सिलेबल है वो टी. So together, ST. और इसको हम कैसे इकट्ठा पढ़ेंगे एस टी. And notice the accents on the second syllable, ST. और आप ये देखिए कि एक्सेंट जो है एक्सेंट मार्क के ऊपर है और जो सेकंड सिलेबल पे है और एस टी. And if you have the new on the end, then it's STeen. लेकिन जहां कहीं भी आखिर में आपको न्यू नजर आएगा तो फिर हम इसको एस-टीन पढ़ेंगे. All right, let's look at the first person plural form. और अब हम देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन जो प्लूरल फॉर्म है. Notice we have the same ES on the front of it. और आप देखें कि अब आपको वही ES जो है वो नजर आ रहा है. Which is in fact related to the English is. और ये कहां से आया? ये इंग्लिश का जो इज है जो पहले बताया था ये इंग्लिश के इज से आया. So we have S again on the front. और आपके सामने जो फ्रंट में है वो एस है. And then the second syllable, men. और उसके बाद सेकंड सिलेबल जो है वो men. And together, S men. और इसको जब हम इकट्ठा पढ़ेंगे तो S men बोलेंगे. Again, the accent is on the end because of the accent mark. और आप दोबारा देखें कि जो एक्सेंट है वो आखिर में है क्योंकि एक्सेंट जो मार्क है वो आखिर में. S men. यह है S men. The second person plural form और सेकंड पर्सन प्लूरल फॉर्म also begins with S. और ये S से शुरू हो रही है. And the second syllable is te. और जो सेकंड सिलेबल है वो te. S te. इसको हम पढ़ेंगे S te. Now, there's a difference between S te and ST. और आप ये all is different. आप ये देखें कि S te और ST के दरमियान डिफरेंस है. S te. And then finally, the third plural. और आखिर में जो है वो थर्ड फॉर्म है. EC. और ये है EC. Now, because the forms change depending on the pronoun, you can think of the forms as having the pronoun built into them. और जो इसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपको देख रहे हैं कि जब हम देखते हैं कि कोई जमा है या वाहिद है तो उसके साथ साथ जो है वो फॉर्म्स जो हैं वो तब्दील हो रही हैं.
So, as men would be translated we are, whether or not you have the word we present or not. It's built into the form. और जब भी आप एज मैन देखेंगे तो आपने इसका जो तर्जमा करना है वो है वी आर. Now, we gave you a handout that has the pronouns all on one sheet for you, so you wouldn't have to keep flipping back to this. You gave that to them, right? Yeah. आपके जो मैंने ये जो बुक्स भेजी हैं उसके अंदर एक पूरा सफा है जिसके अंदर ये तमाम के तमाम जो है एक टेबल की तरह ये इकट्ठे लिखे हुए हैं. I am talking about this sheet. और ये You वाली have the sheet, right? ये शीट आपके जो नोट्स हैं उसके अंदर मौजूद है. If you have this sheet, pull it out so we can make reference to it. अगर आपके पास ये शीट जो है वो मौजूद है अभी तो वो लाजमी मौजूद है. अगर आपके पास नोट्स हैं आप देखें इसके अंदर ढूंढें और इसको बाहर निकालें. Because that'll be easier than trying to flip back in your grammar back to this table. Because it's several pages back. तो अगर आप सिर्फ उस टेबल को उस शीट को देखेंगे तो उसके अंदर काफी चीजें जो हैं आपने पीछे पहले ही सीख ली हुई हैं. Yeah, that's why we gave you the handout. It's simple. और इसलिए आपको जो है वो हैंड्स आउट दिए गए हैं ताकि अगर आपको कभी वो याद करना पड़ता तो आप सिर्फ उस पेज को देखें और याद करें. जब आपने इसको इसकी तफसीलात देखनी है तो फिर आप अपने बाकी के जो सबक हैं उसके अंदर जाएं. We also gave you this handout. और मैंने आपको ये जो हैंड आउट है जो नजर आ रहा है ये भी दिया हुआ है. And all that is the vocabulary list from this chapter on a separate sheet to make it easier for you to put them in front of you. और ये क्या है? ये सिर्फ वोकैबुलरी है एक सेपरेट शीट में ताकि आप जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकें. That way, I can go to some practice sentences and you can use those two sheets to figure out what the words are. और ये दोनों शीट्स इसलिए हैं कि आप उन दोनों को मिला के जो है वो देखें कि क्या कौन से अल्फाज हैं और उनको मिला के कैसे जुमले बन सकते हैं. All right, so let's just practice some so you feel like it'll give you a little confidence when you can actually read some of this. आए हम थोड़ी सी जो है इसकी प्रैक्टिस करें जिसके जरिए से आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जो कुछ सीख रहे हैं वो बाइबल के अंदर किस तरीके से मौजूद है. So this first sentence is going to be Hebrew. जो पहला सेंटेंस आपके सामने नजर आ रहा है वो इब्रानी में है. And so I want you to grab this sheet, find that handout. मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ शीट, can you little bit zoom out so they have more idea? तो ये वाली शीट आप निकालें. And look at that sheet and find this word. और उसके बाद दूसरी शीट उस शीट के अंदर देखें कि वो लफ्ज कहाँ पे है. और ये जो सामने शीट है ये आपको नजर आ रही होगी. इसका जो नाम ऊपर आप देख सकते हैं. Since it's Hebrew, it's going to be in this first column. क्योंकि ये सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हिब्रू है तो अगर हिब्रू है तो वो पहले कॉलम के अंदर होगा. Can I tell? If you find it, I need to know what person and gender and number it is. Is it first, second, or third person? Is it masculine or feminine? And is it singular or plural? जब आप Can I tell? जब आप इस शीट को देख रहे हैं
तो आप इसके अंदर से सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसकी हम देखेंगे कि ये कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। जो फर्स्ट पर्सन होता है जैसे आई होता है, सेकंड होता है यू होता है, और जो थर्ड होता है वो दी होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि वो जो है वो मुज़क्कर है या कि मोनस है। ठीक है, तो जब भी मुज़क्कर होगा तो एम लिखा होगा, और उसके बाद जब भी मोनस होगा तो एफ लिखा होगा। So here's the word atta. Everybody say atta. और आप देखें ये लफ्ज है जिसको हम जब पढ़ेंगे तो ये होगा अता। Now let's go to that sheet and let's find atta. Well, there it is. और आप देखें इस शीट में गए हैं और आपको नजर आ रहा है कि जो अता कहाँ पे, और आप देखें कि दूसरा लफ्ज जो है वो अता है। Now, unlike Greek and unlike Aramaic, in Hebrew, the second person singular pronouns change form depending on whether they're masculine or feminine. और आप अगर देखें कि जो ग्रीक है या जो अरामी है उसमें ऐसा नहीं, लेकिन जो अब्रानी ज़बान है उसके अंदर जो अता है वो सेकंड पर्सन है, लेकिन इसकी दो फॉर्म्स हैं। And so atta is second masculine. और जो अता है वो सेकंड मैस्कुलिन है। मैस्कुलिन का मतलब है कि वो मुज़क्कर है, Whereas at is second feminine. और उसके बरक्स जो अत है वो सेकंड फेमिनिन है। If it were an Aramaic sentence, they don't change form. So you can't tell whether it's masculine or feminine. It's what we call common. और जब हम इसको अरामी में देखेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे कि ना तो ये मैस्कुलिन है ना फेमिनिन है, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, तब इसको हम बोलते हैं कॉमन। And same thing in Greek. और इसी तरीके से जो है वो ग्रीक ज़बान में है। So we know this is second masculine singular. और आपको पता है कि ये सेकंड मैस्कुलिन सिंगुलर फॉर्म है। And in English, that's the word you. और इंग्लिश में इसको हम यू कहते हैं। Now, what about this word? और जिससे आगे लफ्ज है उसको कौन पढ़ेगा? Again, it's the Hebrew. So let's look at this column. और हमें And I पता have है, it in alphabetical order. So it's right here. और हमें पता है कि ये हिब्रू है, तो इसको आप ये देखेंगे, आपको ये नजर आ रहा है सामने। So there it is. Notice there are no vowels. और आप ये देखें कि इस लफ्ज के अंदर आपको कोई भी वॉल्स नजर नहीं आ रहे। This is the divine name. और ये खुदा का पाक नाम है। And originally it was pronounced Yahweh. और इसको हम जो है ओरिजिनली याहवे प्रोनाउंस करते हैं। But the tradition arose early in Judaism to not pronounce the name. लेकिन आपको पता है कि जो यहूदी हैं वो खुदा का नाम जो है वो अपने मुंह से नहीं लेते। And so what they did was they substituted another word. और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसके जगह पर, यावे की जगह पर एक और जो लफ्ज है वो इस्तेमाल करना शुरू किया। And so we don't have it yet. The other word that they substituted was the generic word for God, Elohim. और उसकी जगह पर जो उन्होंने लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करना शुरू किया, उसको हम जो है एलोहीम कहते हैं। So, but it's the divine name. This tradition was before the New Testament. और ये जो है ये खुदा का पाक नाम है
और ये जो है ट्रेडिशन, ये यहूदी जो है इसको ना बोलते हैं ना लिखते हैं, ये उन्होंने यीशु मसीह से पहले ये करना शुरू किया था कि वो खुदा का पाक नाम को ना लिखते थे और ना बोलते थे, लेकिन उसकी जगह पर एक और जो है वो लफ्ज जो है वो लिखना शुरू किया। You'll remember that one of the 10 Commandments says, do not lift up the name of the Lord your God in vain to an empty purpose. और आपको पता है कि ये कहाँ से लिया गया, क्योंकि 10 हुक्मों से में एक हुक्म है कि तुम अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। So, just in case they would do that by accident, the tradition arose that they just stopped saying the name. और कई दफा ऐसे होता था कि वो अचानक खुदा का नाम ले लेते थे, लेकिन ट्रेडिशंस ये बताते हैं कि उन्होंने फिर इसको जो है वो खुदा के नाम को जो है वो लेना ही जो है वो बंद कर दिया। And I'm going to pause here and I'm going to show you this in the actual biblical text. और मैंने यहाँ पर आपको एक रुक रहा हूँ और बाइबल के अंदर से ये दिखाना चाह रहा हूँ। This is Exodus 20. ये खरूज उसका 20 बाब है। And I'm going to verse 2. और आप जब इसकी दूसरी आयत पे जाते हैं, This is the 10 Commandments. और ये जो है खुदा के 10 हुक्म है। And there's some extra symbols, but this word, do I need to make that bigger? I'll make it a little bigger. I think I can see. I don't know what others. They have a bigger screen than me. Okay, that word, right there, everybody look at it. ये लफ्ज नजर आ रहा है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। Now there's an extra vertical line and there's 2 curved lines. और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा लाइन नजर आ रही है सीधी, और इसके अलावा 2 कर्व लाइंस नजर आ रही हैं। That's actually musical notation. और ये दरअसल क्या है, ये म्यूजिकल नोटेशंस हैं। Because the biblical text is chanted. क्योंकि जब ये अब्रानी बाइबल पढ़ते थे तो अब्रानी बाइबल पढ़ने के लिए वो उसको ऊंचा जो है वो पढ़ते हैं। All right, so this word, believe it or not, you know. और जब इसको ये पढ़ते हैं अब्रानी लोग तो ये इसको गा के पढ़ते हैं बाइबल को। It's right here on your chart. और आप ये देख सकते हैं कि ये आपके इस चार्ट में भी मौजूद है। Do you see that word? आपको ये लफ्ज नजर आ रहा है? What person and number is it? और आप बस देखें कि ये कौन सा पर्सन है और क्या इसका जो है वो नंबर है। Right there, it's first person. आपको ये नजर आ रहा है कि ये फर्स्ट पर्सन है, And it's singular. और आपको ये नजर आ रहा है कि ये सिंगुलर है, वाहिद है। So in English, this is the word I. और इंग्लिश में इसके लिए जो तर्जुमा किया जाता है वो है I, और उर्दू में मैं। Urdu, it's meh. Is that what you said, Kenneth? Yes, sir. So meh. I'm going to learn Urdu, remember? Tika. ठीक है। So meh. मैं। So that's what this word is. और ये आपको ये लफ्ज नजर आ रहा है। And then this is that second word that I showed you. और फिर आप उस दूसरे लफ्ज को जो मैं आपको दिखाया था पहले वो नजर आ रहा है आपको। It's this word. और ये वो लफ्ज है जिसके इर्द-गिर्द आपको कोई भी जो है वो नजर नहीं आ रहे, वाउल्स भी नजर नहीं आ रहे। In the biblical text, they supplied the vowels for that word that they wanted you to substitute for it. लेकिन जो बाइबल के अंदर जब टेक्स्ट ये लिखा जा रहा है तो तब यहाँ पर वो जो है वाउल्स को इस्तेमाल करते हैं। So here we have I, Yahweh. और ये क्या लिखा हुआ है कि मैं और यहोवा। And that makes a sentence.
और ये आपके सामने पूरा जुमला लिखा हुआ है कि मैं यहोवा। It means I am Yahweh. और इसका इंग्लिश में अगर हम तर्जुमा कहेंगे तो ये होगा कि आई एम यहोवा। Now, let's look at the Aramaic column. और अब आप देखें कि जो अरामी जो है वो इसको कैसे लिखते हैं। Look at this word. आप ये लफ्ज देखें Let's find it on our sheet. और आए हम अपनी जो शीट है इसके ऊपर इसको देखें। There it is. वो आपको सामने नजर आ रहा है। That and this are the same thing. There's a slight change in the schwa under the aleph. और आप ये देख सकते हैं कि बाइबल के अंदर और ये जो लफ्ज है वो एक है, लेकिन यहाँ पर मैंने शुवा साथ लिखी है। So again, this is the word I. और अरामी के अंदर इसका तर्जुमा है मैं। And it's pronounced ana. और इसको जब हम प्रोनाउंस अरामी में बोलेंगे तो अन्ना बोलेंगे। आप इसको साथ साथ उर्दू में लिखते जाया करें ताकि दोबारा जब आपको प्रोनाउंस करना पड़े तो आपको पता हो कि इसको किस तरीके से प्रोनाउंस Ana. And then no vowels because it's the divine name. और आप देखें कि अन्ना, और आप देखें कि इसके बाद जो है दोबारा आपको कोई वॉल्स नजर नहीं आ रहे क्योंकि ये खुदा का पाक नाम है। And they didn't put any vowels with it because they expected you to read it with that alternative word. और इसके वॉल्स इसलिए नहीं लिखे गए क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आप इसकी जगह पर दूसरा लफ्ज जो है वो पढ़ें। We're Christians, so we can say the divine name. हम जो हैं वो मसीही हैं, हम बोल सकते हैं, लेकिन जो यहूदी हैं वो खुदा का पाक नाम जो है वो अपने मुंह से नहीं निकालते। So Ana Yahweh. तो ये अना यावे, I am Yahweh. मैं यहोवा। But notice what happens over here in the Greek. लेकिन आप ये देखें कि जो ग्रीक है उसके अंदर क्या हुआ। Okay, I'm going to scroll down. Now let's find this word on our chart. Look at it. Yo. आए हम अपने चार्ट के ऊपर जो है वो यही लफ्ज ढूंढें। All right, so let's go over here. Well, there it is. आपको ये नजर आ रहा है। Yo. How you pronounce it? Ego? That's with a Y. Yo. Ayor. Remember, the gamma is never a G. So it's either a Y or a G sound. Here it's a Y. Yo. Ayor. And make that O more of an O sound. So yo. Ayor. There you go. Now, so there's I. और ये But remember, go ahead, sorry. ये जो लफ्ज आपके सामने अयो, इसका मतलब है I Or me. और मैं। But remember, Greek has to have the verb. लेकिन हमने अभी एक कानून सीखा था जिसके मुताबिक जो यूनानी जुबान है उसके अंदर जो है वो वर्ब का होना बहुत जरूरी है। So, remember our verbs that we had up here. और आपको याद है कि आपके सामने ये एक जो वर्ब्स जो है ये लिखे हुए हैं, अभी हमने इसको सीखा है। So, find this verb. और ये जो वर्ब है ये अपने जो नोट्स हैं उसके अंदर आप ढूंढे। Okay, there it is. Imi. और उसके बाद हम इसको बाइबल में देख रहे हैं तो ये लिखा हुआ है इमी। And there's imi here. और यहाँ पर भी इमी लिखा हुआ है। So this would be I am. और ये होगा I am। And then instead of the name, Greek puts in this word. लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो है जो नाम की जगह पर एक और जो लफ्ज है जो वो लिखा हुआ है। So
going back to our handout, और हम दोबारा अपने हैंड आउट पे जाते हैं जहां पर नाम लिखे हुए हैं मतलब the divine name, Yahweh, अब जो डिवाइन नेम है खुदा का जो कि यावे है, written like this in Hebrew, अब्रानी में हम इसको ऐसे लिखते हैं written like this in Aramaic, और अरामी के अंदर इसको इस तरीके से लिखते हैं, but instead of just writing the name in Greek letters, they substituted another word. लेकिन उन्होंने जो है जब ग्रीक जुबान के अंदर इसका तर्जुमा हुआ इब्रानी बाइबल का, तो उसकी जगह पर एक और जो नाम है वो इस्तेमाल करना शुरू किया, Kappa, Upsilon, Rho, Iota, Omicron, Sigma. कैपा, उपसलान, रो, आयोटा, ओमिक्रॉन, सिग्मा, Kyrios. क्यूरियस, And it's a Greek word for Lord. और जो क्यूरियस है ये खुदावन को कहते हैं। So back to our sentence, I am the Lord. और ये इसका तर्जुमा इस तरीके से बनेगा कि मैं तुम खुदा, Which is what we had over here. I am Yahweh. But the tradition arose that when you came across the divine name, you actually substituted the word Lord. And we see this reflected in the Septuagint. और हुआ ये कि जब यावे का जो लफ्ज जब आ रहा था तो उसकी जगह पर जब दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू किया तो वो खुदावन का लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू किया। तो बाकी तर्जुमों में भी और काफी जगह पे आपको खुदावन ही नजर आता है, यहोवा जो है वो नहीं लिखा जाता। So, reading the Hebrew, Anochi Adonai, और जब हम इसको इब्रानी में पढ़ते हैं तो एनोही एदोनाई, I am the Lord, मैं खुदावंद हूँ, or I am Yahweh. ओके, और यहाँ इसको आप कह सकते हैं कि मैं यहोवा हूँ। And same thing in Aramaic. Ana Adonai, और इसी तरीके से जो है वो अरामी के अंदर है अना एदोनाई, I am the Lord, मैं खुदावंद, or I am Yahweh. और यहाँ मैं यहोवा। All right. Back to the sentences. आए हम अपने जुमलों की तरफ जाते हैं। You've seen how this works. We've identified this word, ata. और आपको पता है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले अपनी जो हैंड आउट है उसके अंदर ये लफ्ज अता जो देखा था, And it was right here. और ये आपको नजर आ रहा है, And that turned out to be the second masculine singular. और आपको नजर आ रहा है कि ये सेकंड मैस्कुलिन सिंगुलर है, Meaning second person, masculine gender, singular number. इसका मतलब है कि ये सेकंड पर्सन है, इसकी जो जेंडर है वो मैस्कुलिन है और सेकंड जो है वो पर्सन है। Right. So, sorry. How, and you recognize this, somebody translate this for me. और अगर आप इसको देख रहे हैं तो कोई यहाँ से जो है इसको ट्रांसलेट करे। Let me ask somebody. Yes. All right. तो शावर से जो सबसे आगे हमारे बैठे हुए भाई ऑरेंज शर्ट में, इसका आप तर्जुमा करें जैसे भी आपको आता है। माइक खोल लें, इसका तर्जुमा करें। No, second person. सेकंड का जब होगा, फर्स्ट होता है मैं, सेकंड होता है तुम या तू, यू। अभी आप करें तर्जुमा। रहीम यार खान, आप तर्जुमा करके बताएं।
All right, let's work on that then. चलें अगर दोबारा इसको आप देखें ध्यान से. All right, let's do this in Urdu if you don't mind. Ani and Anochi would be what in Urdu? मैं, What is ata in Urdu? तू, What's at in Urdu? वो, इस. So Urdu has a masculine and a feminine second person pronoun. Sorry, no, it's same. So this is two both times. Yeah. Two if you're talking to a man, or two if you're talking to a woman. Woman, yeah. Explain that to them, please, right quick. Okay, आपको पता है कि जब भी किसी आप औरत को बुलाते हैं जो आपके सामने खड़ी हो तो आप उसको तू कहते हैं. अगर कोई मर्द आपके सामने खड़ा है तो आप तू कहते हैं. तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर क्या है कि आप जो हैं वो मैं है, जिसका मतलब है कि आप फर्स्ट पर्सन हैं. ठीक है, आपके सामने जो खड़ा हुआ है चाहे वो औरत हो या मर्द, आपने उनको तू ही कहना है. और इंग्लिश में भी जो है वो यू ही कहते हैं, चाहे कोई मर्द हो या कोई औरत हो. Did you do that? Yeah, I did it. Okay. And then down here, third person. और जो नीचे जो है वो आपके सामने थर्ड पर्सन लिखा हुआ है. This is masculine. This is English he. How do you say that in Urdu? Okay, you are cutting. Can you explain, please? What is the third masculine pronoun, third masculine singular pronoun in Urdu? और अगर जब आप, it's the same for the both male and female. So, Okay, so you have to explain then that this is different. If referring to a man, it's the Hebrew word who, and if referring to a woman, it's the Hebrew word he. और जब भी आप जो अब्रानी के अंदर किसी तीसरे के साथ आप मुखातिब हो रहे होंगे, तो अगर कोई वो मैस्कुलिन होगा तो उसके लिए हु जो है वो लफ्ज इस्तेमाल होता है. ये इंग्लिश का हु नहीं है, ये अब्रानी का हु है. राइट, इसको हु पढ़ेंगे पहले वाले को, लेकिन जब ये फिल्म जो ये मोनस होगा तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ही. ठीक, हमारे पास क्या उर्दू में इसको कैसे होता है? देखिए, मैं खड़ा हुआ हूं यहां पे, आप सामने हैं, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, आप सामने हैं तो आप यू हैं, आप सेकंड पर्सन हैं. लेकिन अगर हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद हो या ना हो, तो उसको हम जो है वो कहते हैं. ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे जब सेकंड मैस्कुलिन आपको सिंगुलर नजर आ रहा है तो हम उसके लिए यू का लफ्ज या तुम का लफ्ज इस्तेमाल करें. किसको समझ आ गई है तो वो अपना हाथ हिला के बताएं जो मैंने कहा है. I got a question. Go ahead. आपको समझ आई है तो हाथ हटाएं, नहीं समझ आई तो हाथ ना खड़ा करें. इसका मतलब है आपको ग्रामर नहीं आती. चलें. All right. Wait, do you see her raising her hand? I was asking if you guys understand what I'm trying to say, so raise your hand. Oh, that's what they were doing. They understand. Okay. So, what was I doing? Sorry. Back to our sentence. आए हम दोबारा अपने सेंटेंस के ऊपर आते हैं. The orange shirt guy, right, was doing this. और orange shirt guy, जिसने orange shirt पहनी है वो सब इसका जवाब देंगे. There are 3 orange shirt guys here. Oh, well, this guy, I can see him on the screen. Anyway, have the guy do it again. So, orange shirt guy from Peshawar. Peshawar के अंदर जो सबसे आगे भाई बैठे हैं वो. जी पढ़े आप, जो आप बोल सकते हैं आप उसको पढ़ें. इसमें शर्माने की बात नहीं, सब एक जैसे हैं, हम सीख रहे हैं इकट्ठे मिलके. Let me make it a little bigger. चलिए, ये हम फर्स्ट जो सेंटेंस है इसकी बात कर रहे हैं. जी बोले. इसके साथ जो बहन बैठी है ये आप बताएं. नो, आप इसको इब्रानी में पढ़ें. ये उर्दू में सही आप कह रही हैं. सिंधी किसी को आती है? सिंधी में अता कहते हैं ना.
तो ये वही लफ्ज है, तू को अता कहते हैं, तो ये वही है जो इब्रानी में भी कहते हैं। पढ़े को किसको आता है वो पढ़े, पीछे मेरे यहाँ में भाई सनी बैठे हुए हैं, आप अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ें प्लीज। वेरी गुड, नेक्स्ट। he's I think reading the first one good. Ata. All right, well, look, that's what I want. We're doing this. But remember, there's a ta on the handout, right? और आपके सामने आप अपने नोट्स लेके आया करें, आप इसके ऊपर लिखा करें। अगर आपको बोलना नहीं आता तो उर्दू में आप अता लिख दें ताकि आपको पता हो कि क्या है, क्योंकि आपको अल्फाबेट्स नहीं आती इसलिए आप इसको पढ़ नहीं सकते। अता ये लिखा हुआ है। So Hebrew ata is second masculine singular, so it's Urdu tu. जो अब्रानी के अंदर जो सेकंड मैस्कुलिन सिंगुलर है उसको हम अता बोलते हैं। उर्दू में जिस चीज को हम तू बोलते हैं ना, तो ये भी सेकंड मैस्कुलिन सिंगुलर ही है। So this is, we've identified it. So now it's the same word here. और आपको वही लफ्ज जो है वो पहले जुमले के अंदर नजर आ रहा है। So what word is that in Urdu? और अगर आप इसको तर्जमा करें तो आप अता को उर्दू में क्या कहेंगे? कराची से कोई बताए। कराची से कोई बोले। So would this not be Urdu too? No, yeah, same thing. I want somebody read it and translate. They don't. Okay. Well, they can't read this. They don't have vowels for it. We are just talking about the first word. Sir, Ganesh compared. Sir, you read it Urdu or English? No, there's no English. It's Hebrew and Urdu. Okay. Ata Yahweh. Tu Khudavan hai. Okay. Did you hear? I heard. Okay, so that's good, I think. What do you think? Okay. So how would we translate this sentence? और अब अगर इस पूरे आपको सेंटेंस को तर्जमा करना पड़े तो अरफान मोरिस आप बताएं इसको आप किस तरीके से इसका तर्जमा करें। ना माइक खोलें। तू खुदावन है। Okay, he is right. Good. You are the Lord. All right. Let's do the same sentence in Aramaic. आए हम इसी सेंटेंस को अरामी के अंदर देखिए। So let's find this word on our sheet. आए हम इस लफ्ज को अपनी शीट के ऊपर ढूंढे। Everybody see that on their handout? आपको नजर आया आपके हैंडआउट्स के अंदर? And remember, in Aramaic and in Greek, they don't make a difference of gender. और आप याद रखें कि जो ग्रीक हैं और जो अरामी हैं वो जेंडर का जो है वो डिफरेंस नहीं करते। So it's two. All of them are just two. उनके लिए सिर्फ दोनों जो हैं वो तू है। Now, at and aunt are just alternative forms. They're the same word, just two different pronunciations. At and aunt. ये आपके सामने जो लिखा हुआ है ये आत और आंत लिखा हुआ है और ये दोनों जो हैं वो उसकी दो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं और ये कभी भी कोई भी इस्तेमाल होता है। So, there's that word, and there's that. Somebody translate that sentence. और आपके सामने जो है अरामी के अंदर ये लिखा हुआ है और जो हमारे पास सांगला हिल से जो है वो कोई इसको ट्रांसलेट करे और पढ़े।
जो हमारी बेटी ब्लैक जिसने दुपट्टा लिया हुआ सबसे पहले सबसे आगे, आप बच्चे ये पढ़ो। ऊंचा जरा बोलें, the top of your lungs. She's saying ati and Okay. It's just aunt, not ati, antu. और इसको जब हम पढ़ेंगे दोबारा आप देखें, ये अलफ, नून और ते, ये अंत है, अंत। इसका तर्जुमा करें, बताएं क्या है। And how do we translate it? आपकी आवाज नहीं आ रही। She said, "You are God." Okay, better is you are the Lord. There's a separate word for God. क्योंकि हमारे पास जो है खुदा के लिए जो एक लफ्ज मौजूद है, इसको जो है हम खुदावन कहेंगे, क्योंकि अभी हमने ये सीखा है कि हम यहोवा का जो लफ्ज नहीं बोलते यहूदी, क्योंकि वो दूसरे हुक्म की वजह से, तो इसके लिए जो लफ्ज रिप्लेस हुआ है वो खुदावन है। Okay, let's look at the Greek. आए हम इसी को ग्रीक के अंदर देखें। So here's our sentence. आपके सामने जो है वो सेंटेंस लिखा हुआ है। So first thing we gotta do is find this. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सबसे पहले लिखा हुआ है इसको शीट के अंदर ढूंढें, अपने हैंड आउट के अंदर। ये आपके सामने है और आपके पेजेस गंदे होने चाहिए। आप उर्दू में इसके ऊपर लिखें कि इसको किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, इसका मतलब क्या है। अब It's pronounced sin. इसको हम पढ़ेंगे sin, No N on it, just S-Y. Sin. से, It's second person singular. और ये सेकंड पर्सन सिंगुलर है। Two. से, जिसका तर्जुमा वही है तू। So two. Then we have this word. अभी हमने ये लफ्ज जो है अभी सीखा था थोड़ी देर पहले। This is the verb. और ये जो है एक वर्ब है। क्यों? अभी हमने ये सीखा कि ग्रीक जो है उसको वर्ब की जरूरत होती है। So you remember back up here in 3.8. आपको याद है कि जब हम 3.8 देख रहे तो हमने उस जो पैराडियम है उसके अंदर ये लफ्ज देखा है जिसका तर्जुमा है you are। That is the second person singular of the verb to be. और ये सेकंड पर्सन सिंगुलर है कौन से लफ्ज का? इमी का। So it means are. तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? Are. You are. ठीक है, तो ये इसको हम तू खुदावन में इंग्लिश में you are। So, oh, sorry. Gotta go back to, I forgot, sentences. Down here. Okay. You are. Two, and I don't know how to say are in Urdu. और तुम। So translate this for me. So it's same way we have to translate like just in a one word like we do it in Hebrew. Okay. So you are curious. अब्रान जो ग्रीक है इसके अंदर जो यहोवा है उसको क्या पढ़ते हैं हम? क्यूरियस। The Lord. The Lord। खुदा नहीं, खुदावंद है। So you are the Lord. You are the Lord। अब लाहौर में या मैं काफी लोगों को देख रहा हूँ आप लिख नहीं रहे, आपको बाद में याद नहीं रहना
आपने घर में प्रैक्टिस नहीं करनी। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसके ऊपर लिख लें। What's not important? No, I'm telling them you how to pronounce it. You can write it on your notes. All right, let's look at sentence 2. आए हम जो है दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। This is Hebrew. सबसे पहले हम देख रहे हैं अब्रानी के अंदर। So who? So we got to find that word in that sheet. What pronoun is this? ये जो लफ्ज है ये हु लिखा हुआ है और आप देखें कि ये क्या है शीट के अंदर, इसकी क्या स्टैंडिंग है। All right, so where on this sheet is it? I'm going to go back to the sentence. They have the sheets. Take a look at it. Somebody tell me what this pronoun is. आपके पास शीट मौजूद है, आप वहां पर देखें, मैं सेंटेंस पे मौजूद हूं और आप मुझे बताएं कि ये क्या है। ये सेकंड है, थर्ड है, पर्सन है, मैस्कुलिन है, सिंगुलर है, फेमिनिन है, ये आपने बताना। चलिए मैं आप में से कोई वॉलंटियर बताएगा कि मैं खुद इंतखाब करूं। ये थर्ड पर्सन मैस्कुलिन। That's correct. वेरी गुड, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन, ठीक है। Now, how would you translate that into English? और इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसको हम ट्रांसलेट क्या करेंगे? आप उसी शीट के ऊपर ये लिखा हुआ है, इसको क्या ट्रांसलेट किया? That's right. And what is that in Urdu? ही को उर्दू में क्या कहते हैं? वो So vo is third person in Urdu. या Yay, tika. ठीक है। Okay, now you'll find this one on this sheet, but instead of looking on the sheet, why don't you pronounce it and see if you can figure out what it is? It's a proper name. ये जो आपके सामने एक लफ्ज लिखा हुआ है, ये आपको आता है, आप में से कौन इसको पढ़ने की कोशिश करेगा? It is Israel. I didn't hear her. Dr. Vance, she's very close. Okay, she's saying right. I think there's some problem with pronunciation. Okay, दोबारा पर बोले व्यानिका। I'm pronouncing it in English. Israel. Yeah, do it in, read it in Hebrew for me. जैसे उर्दू में पढ़ते हैं ना, वैसे ही आपने पढ़ना है, उर्दू में जो कहते हैं। Israel. Okay, remember that's a Y on the front of that. It's yes. तो योद है, ये वाई की आवाज देता है। It's a y sound. तो ये Yes. ये यह का साउंड देगा, यश। Don't make it a shin, make it a sin. Okay, yes. So have her try it again. Say the word again. वेरोनिका दोबारा आप बोलो। Yisrael. That's much better. Yisrael. Yisrael. So what is that word? इसका मतलब क्या है? यशरायल। किसी को आता है यशरायल का मतलब? Wo Israel. Yeah, that's right. Vo Israel. Israel. I don't know how to say how you say it. Yeah, same way she said. That's the way they pronounce. So Vo Israel. Yes, that's what that is. वो इस्राएल। तो इस तरीके से इसको तो किसी को इस्राएल का नहीं पता तो क्लास से बाहर जा सकता है। So he is Israel. तो इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे कि वो इस्राएल है। Okay, I'm not going to go to the Aramaic now. I'm going to go to the next sentence in Hebrew. अब जो है मैं इसको अरामी में नहीं जाता, मैं चाह रहा हूं कि हम यहीं पे जो है अगला सेंटेंस जो है वो हिब्रू में देखें।
All right, somebody find this one. You know how to find it now. Somebody find it on that sheet and tell me what person, gender, and number it is. आपको जो है वो ढूंढना शीट से आ गया, आप उस शीट पे जाएं, हैंड आउट के ऊपर जाएं और आप बताएं कि ये जो लफ्ज है इसका कौन सा ये पर्सन है, इसकी जेंडर क्या है और इसका नंबर क्या है. It's third person feminine. Singular or plural? थर्ड पर्सन जो फेमिनिन है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? Yes, it's वाहिद है कि जमा है? singular. Wahid. That's correct. वेरी गुड, ये सही है. Okay. Now, whoever was that was just talking, read this name. अब आप ये देखें कि आपके सामने एक ये नाम लिखा हुआ है, आपने ये पढ़ना है और जिससे मैं पूछूंगा उसी ने पढ़ना है. रावलपिंडी में एक बेटी बैठी है जिसने ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू. बड़ा मशहूर ये नाम है, हर दूसरे बंदे का नाम होता है, दूसरी लड़की का होता है. Sir, can you hear? Yeah, we can hear you, Maria. Ruth, That's correct. Very good. So, तो उससे पहले क्या लिखा हुआ है? now translate this. उससे पहले क्या लिखा है वो बताएं और पूरे जुमले को ट्रांसलेट करके बताएं. आप सही इसका तर्जुमा सही कर रहे हो कि वो रूथ है. She is Ruth. She did it right, Dr. Oh, I didn't hear it. Did she say Bo Ruth? Yeah. Okay. So, everybody listen. Let me read the Hebrew for you. हर जो है एक ध्यान से इसको सुने और अपने नोट्स के ऊपर लिख लें कि ये क्या लिखा है. He Ruth. और ये जो है ये अब्रानी में जो लिखा हुआ है ये ही है. ठीक है, ही रूथ. ठीक है, जो लड़की के लिए वो इस्तेमाल होता है वो ही होता है. So, ठीक है, तो ही रूथ का मतलब है कि वो रूथ है. all right. Let's go down here. This is the Aramaic. और अभी जो है हम इसकी जो अरामी फॉर्म्स है वो देखते हैं. And notice it looks exactly like the Hebrew. और आप ये देखिए ये बिल्कुल हिब्रू की तरह है, कोई इसमें फर्क नहीं है. The third person pronouns are identical in Hebrew. In third person singular pronouns are identical in Hebrew and Aramaic. और आप देखिए जो थर्ड पर्सन जो सिंगुलर्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं अब्रानी के अंदर और अरामी के अंदर. So, this is also Hu Yisrael. और ये भी लिखा हुआ है हु यशराएल. Okay, I know I have a list, but that's an S, not an SH. That's my throat actually. So these poor students are never going to hear us send properly. I'm gonna stop it. So you can talk to them direct. Okay. So, how would somebody translate Hu Yisrael for me? और कोई जो है वो ट्रांसलेट करे कि इसका जो है वो तर्जमा क्या होगा, इंग्लिश में या उर्दू में. Pick a campus. He is Israel. That's correct. Tika. He is Israel. Dr. Vance, that was your favorite orange color guy. Oh, well, somebody else needs to do it. Yeah, very good. आपका नाम क्या है? What's your name? I don't know. All right. Number 3. हम तीसरे नंबर पे जा रहे हैं.
और तीसरे नंबर पे रहीम यार खान, आप ये पढ़ें। रहीम यार खान, तीसरा जो सेंटेंस है अरामी के अंदर जो लिखा हुआ है, आपने वो देखा था कि इब्रानी में भी बिल्कुल वही था, तो ये देखिए, कोशिश करें पढ़ें कि क्या लिखा है। Can you I think a little bit close up, so maybe they're mixing. Yeah. This one. जहाँ पर हाथ का निशान है वो वाला। He Ruth. Now translate that into Urdu. अब आप इसका तर्जुमा करें, इंग्लिश में कर दें, उर्दू में कर दें। She is Ruth. नहीं, वो ये थर्ड पर्सन है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? जब रूथ दूर खड़ी होगी तो क्या बोलोगे उसको? जी, Wo Ruth. वो रूथ। Tika. Now in English, that is, she is Ruth. और जब हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि she is रूथ, वो रूथ है। All right, now we're going to do some Greek. Remember, in the Greek, you got to go back up and find that verb. Dr. Vance, would you like to give me a little bit last minutes as we spoke? Oh, you want me to stop now? I think so, because I have to I want everybody should be on one page. Okay, so listen, we're gonna finish all these. So we're gonna take as long as it takes to go through all these sentences together as a group. Tell them that. Okay. हमने ये जितने भी जुमले लिखे हुए हैं ना, इन सबको मिलके जो है इसका तर्जुमा करना है और इसको सीखना है, और आपने इससे घबराना नहीं है। आपको इब्रानी जो है या जो यूनानी है वो पढ़नी आ जाएगी। Okay, then I'm done if you want to talk to them. Yes, please.